Good day everyone. Today we will continue our discussion further with haloalkanes and haloarenes. So in the last class we have finished with the discussion of preparation of alkyl halides from alcohols. तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि आप कैसे अल्कोहल से alkyl halide prepare कर सकते हैं. If you have not seen the previous lecture, I will add the link in the description. आप वहां से जाके देख सकते हैं. Today we will discuss one more method of preparation of haloalkanes and haloarenes, that is from hydrocarbons. मतलब आज हम बात करेंगे कि कैसे आप हाइड्रोकार्बन से haloalkanes and haloarenes prepare कर सकते हैं. So let us start with the discussion. So method of preparation. Method of preparation of what? Haloalkanes and haloarenes from hydrocarbons. From hydrocarbons. So basically there are four ways by which you can prepare haloalkanes and haloarenes from hydrocarbons. So let us see the four ways. चारों ways को देख लेते हैं and then we will talk about them one by one in detail. So the four ways are, first one is by free radical halogenation. First one is free radical halogenation. Second one is by electrophilic substitution. The third is a very important way, that is Sandmeyer's reaction. The third is Sandmeyer's reaction. And the fourth is from alkenes. So these are the four ways by which you can prepare haloalkanes and haloarenes from hydrocarbons. तो आप फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से प्रिपेयर कर सकते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन का यूज किया जा सकता है, या एल्कीन से भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं haloalkanes and haloarenes from hydrocarbons. So let us talk about them one by one. So first we will talk about free radical halogenation. तो चलिए बात करते हैं रिगार्डिंग फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. फ्री रेडिकल halogenation. So by this method you can prepare an alkyl halide from alkane. इस मेथड का यूज करके आप alkane से alkyl halide prepare कर सकते हैं. So जैसा कि you can see that it is halogenation means attachment of a halogen atom to an alkane. एक alkane में जब एक halogen atom आप attach कर देते हैं, you get the corresponding alkyl halide. So let us see one reaction. एक छोटा सा reaction देख लेते हैं. Suppose करिए there is an alkane. एक alkane है, for example methane एक simple alkane है. It reacts with halogen such as chlorine. Methane reacts with halogen chlorine, and this reaction occurs at high temperature or it requires UV light. This reaction occurs at high temperature and it requires UV light. So UV light
or heat, you can say. Okay, so this methane will react with chlorine to form the corresponding alkyl halide CH3Cl plus the byproduct So हुआ क्या यहाँ पे, if you will try to understand, this is a simple alkane, ये एक simple alkane है, methane, in which 4 hydrogen atoms are attached to the carbon atom, and the corresponding alkyl halide जो मिला उसमें क्या है, you can see one of the hydrogen atoms gets replaced by the halogen atom to give you the corresponding alkyl halide. So this is halogenation, ये halogenation है, and this halogenation is basically a substitution reaction. ये बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ जहां एक हाइड्रोजन एटम को एक हैलोजन एटम ने रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन एटम को एक हैलोजन एटम ने रिप्लेस किया टू गिव यू द करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड, एंड दिस रिप्लेसमेंट अकर्स इन फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल्स. ये जो रिप्लेसमेंट होता है, किसका रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट बाय द हैलोजन एटम occurs as free radicals. So that is why the method is known as free radical halogenation. Now the question which will come to your mind is, what is a free radical? एक free radical क्या होता है? So suppose करिए there is a chlorine molecule. Chlorine का एक molecule है which contains 2 chlorine atoms which are connected by a covalent bond formed due to mutual sharing of electrons. Now if this bond breaks, कैसे break करेगा, homolytic dissociation of bond takes place. मतलब this bond breaks such that जो electrons हैं, 2 electrons which are shared to make this bond, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाता है. सो द स्पीशीज विच कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन दिस होमोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ दिस कोवैलेंट बॉन्ड आर नोन एज फ्री रेडिकल्स. सो दीज आर फ्री रेडिकल्स विच आर फॉर्म्ड ऑन होमोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ दिस बॉन्ड. सो इन्हीं को आप फ्री रेडिकल्स बोलते हैं. We will talk about free radicals. We will talk about the mechanism also of this reaction. हम mechanism के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे. So don't worry about that. So किस लिए इस मेथड को फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन बोला जाता है, मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे. क्यों? एक एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया एक हेलोजन एटम से, and this replacement occurs in form of free radicals. That is why the method is known as free radical halogenation. So kindly go through this topic from the textbook. एक बार इसको textbook से पढ़ लीजिएगा. It is a very important and a very easy topic. ठीक है? We'll continue to talk about it further in the next class, but today we will keep it till here only. Thank you so much.